Assalamu alaikum everyone, welcome back. I am Momna and we are discussing estimations. In the last video we talked about what digits are, आपके पास कौन कौन से digits होते हैं, and we talked about the rules for significant figures on those digits, कि आपके पास कौन कौन से digit किस किस number में किस किस तरह significant होते हैं. Today I want to talk about how to convert a number to a given significant figure. So for example मैं आपको एक number दे देती हूँ और मैं कहती हूँ इसको convert कर दें to two significant figures या इसको convert कर दें to three significant figures or whatsoever the question wants. Before I move on to that, I want to talk about rounding off. Now, rounding off is like a very easy concept, a concept that we have been doing since primary school. Lekin I want to clear a very small confusion that students have in rounding off before I move on to the conversion of significant figures. अब सबसे पहला है, I'm going to explain this concept with the help of a question. For example, you have this number. So you have 96.482, so 96.482, and you want to first convert it to one decimal place. आपको decimal places की भी conversion आनी चाहिए. अब आपने one decimal place का करना है. One decimal place means over here, ये कौन सी place है? This is the 10th place. So this is ones, this is tens, this is 10th, this is 100th, this is 1000th. ठीक है, अगेन समथिंग दैट वी डू इन प्राइमरी स्कूल. अब सबसे पहले फर्स्ट डेसिमल प्लेस मीन्स आपने इसको 10th प्लेस तक करना है. ठीक है, सो द फर्स्ट स्टेप इज अंडरलाइन द डिजिट इन द 10th प्लेस. सो you've identified के फर्स्ट डेसिमल प्लेस मीन्स द डिजिट इन द 10th प्लेस एंड you've underlined it. अब दूसरा स्टेप क्या होगा? लुक एट द डिजिट दैट इज नेक्स्ट on the right to the number that you have underlined. So in this case I have underlined 4 जो मेरी 10th पे था. 4 से अगला नंबर कौन सा है? 8. अब मैं सिर्फ और सिर्फ 8 को देखूंगी और डिसाइड करूंगी कि मैं इस 4 में 1 ऐड करूंगी या नहीं करूंगी. यूजुअली क्या होता है कि वी लुक एट ऑल द नंबर्स एंड देन वी सी, बट in rounding off you always just look at the very next number which is in this case 8. अगर तो 8 या अगर तो जो अगला नंबर है दैट इज़ ग्रेटर देन 5, देन यू ऐड 1 टू द नंबर दैट यू हैव अंडरलाइंड एंड दैट विल बी योर फाइनल आंसर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है 4. 4 के अगला नंबर क्या है? 8. 8 is greater than 5, so if on the right the digit is 5 or more, so 8 is 5 or more, yes, you add 1 to the digit in the 10th place. 1 to the digit in the 10th place will give you 96.5 as your answer to one decimal place. Please do not end up writing it as 5.00. ये गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर फिर आपके पास 3 decimal places ही होंगी. So what's the point in adding zeros? So you have to make sure that your final answer is still one decimal place, which in this case is 96.5. इसी सवाल में let's say I want you to round it off now to the nearest whole number. होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आपके पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और ज़ीरो होता है. अब यहाँ पर इसका क्लोजेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या हो सकता है? 96.482 है, या तो वो 96 हो सकता है या तो वो 97 हो सकता है. ऑलवेज रिमेंबर दैट डेसिमल्स आर नॉट होल नंबर्स. सो डेसिमल्स में या तो आपके पास 96 होता है या तो आपके पास 97 हो सकता है. अब आप डिसाइड कैसे करेंगे कि 96 है या 97 है? अगेन you will underline, this is the number, right? 96.482. आपने इसको to the nearest whole number लिखना है. that means to the nearest ones लिखना है. अब ones पे मेरा कौन सा नंबर है? ones वाली प्लेस पे 6 है. ठीक है, मैंने 6 को अंडरलाइन कर दिया. अब मैं 6 से बिल्कुल अगला नंबर देखूंगी. I do not have a concern with what the other numbers are. I will only look at the very next digit on the right after 6, which is 4. अब 4 यहाँ पर बड़ा है 5 से, 5 के बराबर है या छोटा है? इट इज़ स्मॉलर देन 5, सो यू विल नॉट add 1. So when you round off 96.482 to the nearest whole number, ये आपके पास 96 आता है. यूजली गलती किधर होती है? We start from the extreme right. 2 is less than 5 तो आप 8 पे कैरी नहीं करते. लेकिन अगर 8 आपका 5 से ज़्यादा है तो आप इसको 5 बना देते हो, फिर इसको 97 बना देते हो, which is not correct. You just have to look at the very next number after the number that you have underlined.
I hope this is clear, and if it is, let's move on to the conversion to significant figures. So you want to convert the following to 3 significant figures. आपके पास पहला ये है. Let's do this one together, and then the other questions you will pause the video, you will attempt the question, and we will see if you have got it right or not. अब आपने इसको convert करना है 3 significant figures पे. तो मैं अपने सबसे पहले starting from the extreme left, I am going to underline the very first 3 significant numbers that I can find. So 3 is a non-zero digit, तो ये significant होगा. 4 is a non-zero digit, तो ये भी significant होगा. 5 is a non-zero digit, तो ये भी significant होगा. So the first 3 significant numbers that we have are 3, 4 and 5. Now what I'm going to do is I'm going to see the very next number of the last underlined number. So 5 is the last number that I've underlined. उसके बिल्कुल अगला number है 8. 8 is greater than 5, right? So I'm going to add 1 to 5. तो मेरे जो first 3 significant numbers होंगे वो मेरे पास हो जाएंगे 3, 4, 6, because 1 to 5, adding 1 to 5 means 6. Now what you will do is you will put zeros in place of all other numbers. तो आपके पास 3, 4, 5, 8, 2 to 3 significant figures will be 3, 4, 6, 0, 0. These zeros are non-significant because they are trailing zeros without a decimal. Let's do one more together and then you will do the last 2 questions on your own. अब आपने कन्वर्ट करना है 183.46 को. सबसे पहला काम आप यही करेंगे, आप अपने पहले 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स अंडरलाइन करेंगे. सो द फर्स्ट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 1, 8 and 3, राइट? सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू चेक कि 3 के बाद जो मेरा नंबर है विच इज़ 4, is it greater than 5, is it equal to 5 or is it less than 5? It is less than 5, so I will not add 1 to 3 and I will just write this as it is 183. अब मेरे जो भी नंबर्स हैं उनकी जगह मैं 0 लिख दूँगी. Now my question is this correct to 3 significant figures? It is not. Why? Because ये दोनों zero significant हैं. These are trailing zeros with a decimal, and trailing zeros with a decimal are significant. So now that I've reached this step, what I'm going to do is I'm going to get rid of all the significant zeros, only the significant zeros. तो आपके पास क्या आ जाएगा 183 and that's it. Because दो significant zeros हैं, ये वाले और ये वाले. जब मैं ये कैंसिल कर दूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 183. So 183.46 correct to 3 significant figures is 183. Now try these 2 questions on your own and I will be back with the answers. Okay, here they are. If you have these, you are correct. Well done. If not, not to worry. We will do the questions together. अब C part देखें 36100.51. अब सबसे पहला काम मैंने किया है, मैंने अपने 3 significant figures underline किए. 1 के बाद 0 आता है. 0 is less than 5, so I will not add anything to 1. I've written 361 as it is. अब एक स्टेप जो मैंने नहीं रखा हुआ is 36100.00. I have replaced all other numbers other than the first 3 significant figures with zeros. Now what I'm going to do is I'm going to get rid of the significant zeros only जो decimal के बाद वाले हैं. So मेरे पास आंसर क्या आता है 36100. Have a look at this last question. D part में आपके पास क्या है? D part में I have underlined the first 3 significant figures. Now these zeros are not significant because these are leading zeros. They are before a non-zero digit in a decimal. Leading zeros with or without a decimal are non-significant. तो ये तीनों zeros आपके पास significant नहीं है. आप अपने पहले 3 significant figures underline करते हो which are 1, 7 and 6. 6 के बाद अगला number क्या है 3. 3 is less than 5, so you will not add anything to 6. So I will write the first 3 significant figures as it is and replace everything else with zeros. Now I will only get rid of the significant zeros which are these 2 zeros at the end. ये वाले तो हमारे नॉन सिग्निफिकेंट थे, ये जो शुरू वाले 3 zeros थे. तो 0.001763 करेक्ट टू 3 significant figures is 0.001763.
00176. These three zeros are not significant figures, so the only significant figures that you have in this number is 7, 6 and 1. So this number correct to three significant figures is 0.00176. This is it for the video. Inshallah, hopefully I will see you in the next video and we will continue from here. Take care everyone. Allah Hafiz.